So here I Gargi Pamar, Assistant Professor BBA in St. Andrews Institute of Technology and Management. So guys, here I'm back with an online lecture series on income tax subject. So let's start the lecture. So in today's lecture, we are going to start 4th unit of your syllabus, and we are going to cover first topic of your 4th unit, that is deduction from gross total income. So first of all, I suggest to all the students to watch all the videos which already recorded before watching this video. Because जब तक आप last previous videos नहीं देखेंगे, आपको ये chapter बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा. So I recommend to watch all the video which is previously recorded. I think 22 videos have been already recorded. So first, watch all 22 videos. After that, I recommend you to watch this video. Okay. Yes. So deduction from gross total income we are going to start in today's lecture. So let's start with lecture. Let me show you the slide. So see guys, if you remember, I have already discussed the format for the calculation of total income or taxable income. Okay, taxable income on which taxable tax may be charged. So the calculation of that income, there is a fixed format. I have already discussed in my first lecture, very first lecture. Okay, so let me revise you one more time. So when we will calculate the taxable income, this format will be followed by us. So first of all, we will calculate the income from salary head, which we have already discussed in very detail that how to calculate income from salary. Okay. Then you will calculate income from house property head. Then you will calculate income from business in profession. Then you will calculate income from capital gain. Then you will calculate income from other sources. And you will do the total of all these incomes. Then the resultant amount will be your gross total income. Then you will less all the deduction in the section 86 to 82 from gross total income, and the resultant amount will be your taxable income. On that income, you have to apply all the tax rates and you have to calculate the tax. Okay, so we have already discussed these 5 heads of the income. That means we have already discussed the gross, how to calculate gross total income. Now in this video, we are going to start these deductions, about these deductions. So this deduction is 80C to 80. There is n number of deduction under this section, that is 80C, 80CC, 80PCD, 80PCE, and so on. Okay, so 80C to 82 there is a lot number of deductions. So we will discuss each and every deduction. Okay, so let's see the deduction under section 80C to 80. So see guys, we will discuss all the deduction through this table. Okay, मैंने एक समरी आपके बना ली डिडक्शन की, जो आपके लिए रेलिवेंट था, जो चीजें आपके लिए रेलिवेंट थी डिडक्शन के सेक्शन में, वो मैंने सारी एक टेबल में लिखी है. इस टेबल में हम पढ़ेंगे, बट कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जिसको मैं टेबल में डिटेल में नहीं लिख पाई क्योंकि उनकी डिटेल बहुत ज्यादा है. ओके, तो वो सेक्शन समझने के लिए हम डिटेल में उनको पढ़ेंगे. बाकी ऑलमोस्ट डिडक्शन हम इस टेबल के थ्रू पढ़ेंगे. ओके. Yes. So let's start the deduction. The first deduction is 80. The section of first deduction is 80. So see what is it? What is the deduction 80C? Okay. So if you are investing any amount in PPF, public provident fund, employees shares to PF contribution, NSC, life insurance premium payment, children tuition fees, principal repayment of home loans, investment in Sukanya Samriddhi account, ULIPS, ELSS, some paid to purchase deferred annuity, 5 years deposit scheme, senior citizen savings scheme, subscription to notified securities and notified deposit schemes, contribution to notified pension fund set up by the mutual fund or UTI, subscription of home loan account scheme of the National Housing Bank, subscription to deposit scheme of a public sector or company engaged in providing housing finance, contribution to notified annuity plan of LIC, subscription of equity shares of the debentures of an approved eligible issue, and subscription to notified bonds to NAPAR. If you are investing some amount in these following schemes, then you will allow a deduction under section 86. Okay, and this deduction is allowed to all the individuals. Okay, this deduction will allow only the individuals, not HUF, not any AOP, not any POI. So this deduction will be allowed to only individuals. What will be the quantum of deduction?
deduction will be allowed for maximum up to 1,50,000. So maximum amount of deduction in the section 80C will be 1,50,000. Okay. So this is the section of ATC. अगर आप इन किसी भी स्कीम में कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ATC में डिडक्शन मिलेगा. डिडक्शन अमाउंट विल बी 1,50,000. Okay. So let's see. Let me show you one thing. See, आपने ये सारी इनकम्स कैलकुलेट कर दिया. सपोज यहाँ पे आपके पास ग्रॉस टोटल इनकम है. Now there is an information that you are investing an amount in PPF. Okay. और अगर आप एक PPF में अमाउंट इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ पे आपके पास इंफॉर्मेशन है कि आपको ATC के अंदर डिडक्शन मिलेगी कितने की 1,50,000. ये मैक्सिमम मनी है. सपोज you invested 2 lakh rupees in PPF, then you will write here less deduction under section 80, and you will write 1,50,000. Although you invested 2 lakh rupees, but the deduction which is maximum allowed is only 1,50,000. That's why you will allow a deduction of 1,50,000 only. But if you invested 1 lakh rupees in PPF, then in that case, what will be the quantum of the deduction? That will be 1 lakh. So maximum limit is 1,50,000. तो अगर 1,50,000 से आपने कम इन्वेस्ट किया है, कम पैसा कंट्रीब्यूट किया है, then in that case वो कम वाला अमाउंट that is 1 lakh rupees will be allowed to you as deduction. Okay, so maximum deduction is 1 lakh rupees. Okay, so this is about section 80C. Now let's discuss next section of deduction. Next deduction is 80CC. Next deduction is 80CCC. So what is it? See, for amount deposit in annuity plan of LIC or any other insurer for the pension from the fund referred in section 1022A. Then if you deposit any amount in any annuity plan of LIC or any other insurer for pension you deposit any amount in any annuity plan of LIC or any other insurer, then in that case you are allowed deduction under section 80CCC. And what will be the amount of deduction? Maximum rupees 1,50,000. Okay, and whom this deduction will be allowed? So all the individuals, for the individual, this 80CCC deduction will be allowed. Okay. Yes. Then next is 80CCD1. So what is section 80CCD1? So let's see. Next deduction is allowed to you is 80CCD1. And when this deduction will be allowed? So if this deduction is available in the respect of employees or assistants contribution in the national pension scheme. If any employee contribute any amount under national pension scheme, then in that case section 80CCD1 deduction will be allowed. What will be the quantum of deduction? The deduction amount will be maximum 1,50,000. Okay, and whom to this deduction will be allowed? To individuals, this deduction will be allowed. Okay. Next deduction is 80CCD1B. So when this deduction will be provided to you? So let's see. Additional deduction of rupees 50,000 is available in respect of employees or assistants contribution to national pension scheme, section 80CCD. So an additional deduction is also allowed of rupees 50,000 to the all individuals if he is contributing that amount in national pension scheme. So national pension scheme में maximum 1,50,000 तक का तो आपको deduction मिलेगा, additional 50,000 का deduction आपको और मिलेगा under 80CCD1. Okay. Yes. The next section is next deduction is 80CCD2. So 80CCD2 deduction will be allowed to those employees who this deduction is allowed in the case where employees contribution to NPS. So अगर आपका employer आपके लिए तो जो भी आपका PPF या आपका जो भी प्रोविडेंट फंड होता है, EPF होता है, ESL होता है, उसमें क्या होता है? कुछ अमाउंट आपकी सैलरी से करते हैं PF. ओके, कोई प्रोविडेंट फंड होता है, कुछ अमाउंट आपकी सैलरी से करते हैं, कुछ अमाउंट एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, और टोटल अमाउंट आपको एट द एंड ऑफ योर सर्विस आपको वो अमाउंट मिल जाता है. ओके, तो एम्प्लॉय जो कंट्रीब्यूशन करेगा उसके लिए डिडक्शन कितना होगा? मैक्सिमम 1,50,000 अंडर सेक्शन CCD. ओके, और जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा उसके लिए डिडक्शन आपको कितना मिलेगा? अंडर सेक्शन 80CCD. ओके, एंड द अमाउंट ऑफ minimum amount of that is 10% of salary. First, you will calculate the total salary of that employee.
whom to this whom this deduction is allowed. So all the employees, for all the employees, this deduction will be allowed. To all the employees, this deduction will be allowed. And the what will be the maximum limit of the deduction? That will be 10% of salary. Okay. So let's suppose, see in this example, you have to deduct all the deductions under section 86 to 80. You have to less all the deductions under section 86 to 80. So previously we take an example that if an employee contributed EPF, okay, we have already taken example. So हमने ATC, suppose हमने ATC के एक deduction दिया, तो then you will write less deduction under section ATC. That is 1,50,000 rupees को deduction दिया. Then next suppose आपने आपका जो NPS है, NPS नेशनल पेंशन फंड में आपने एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया, एम्प्लॉय है उसने कंट्रीब्यूट किया 10,000, तो आपको उसका डिडक्शन मिल जाएगा लेस अंडर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CCD1. ओके. देन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है आपके बिहाफ पे 10,000, तो फिर आप क्या करोगे? लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CCD2. क्या है उसकी लिमिट? 10% ऑफ योर सैलरी. मैक्सिमम कितना अमाउंट? 10% ऑफ योर सैलरी. तो एम्प्लॉयर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? 10,000. और आप कैलकुलेट करोगे आपकी सैलरी का 10%. अगर आपकी सैलरी का 10% ज्यादा है और 10,000 कम है तो 10,000 का रिडक्शन दे दीजिए. लेकिन अगर आपका 10% कम है और 10,000 ज्यादा, ओके, तो फिर वो कम वाला आपको. ओके. तो 80CCD2 में आपको क्या मिलेगा? एम्प्लॉयर्स का जो भी कंट्रीब्यूशन होगा उसका आपको डिडक्शन मिलेगा. व्हाट विल बी द क्वांटम ऑफ डिडक्शन? डिडक्शन विल प्रोवाइड टू यू मैक्सिमम अप टू 10% ऑफ सैलरी. Okay, so this is all about the ATC. This is the subsections of ATC: 80, 80C, 80, 80CCD, 80CCD1B, and 80CCD. Now the next section starts with 83. Next section of deduction is 83. So what is it? Let's see. Deduction in respect of health or medical insurance. Deduction in respect of health or medical insurance. Medical insurance premium. Medical insurance for self, spouse and children. Medical insurance parents more than 60 years old from financial 2015, and uninsured parents more than 80 years old. Yes. So deduction under section 80D is provided to you if you are paying any health or medical insurance premium, then deduction under 80D will be allowed to you. To this section, this deduction will be allowed. So to individuals and HUF, this deduction will be allowed. Then what will be the quantum of deduction? 25,000 and 50,000. Here, see here, 25,000 and 50,000. Now the question arises, what is it? 25,000 भी मिलेगा, 50,000 भी मिलेगा. What does it mean? So उसके लिए देखिए, अगर आपका मेडिकल इंश्योरेंस है सेल्फ, स्पाउस और चिल्ड्रन का, या फिर मेडिकल इंश्योरेंस आपका पेरेंट्स जिनकी एज क्या है लेस देन 60 years, then in that case you are allowed a deduction for 25,000 तो आपको मिलेगा सेल्फ, स्पाउस और चिल्ड्रन का, और नेक्स्ट 25,000 मिलेगा इफ आपके पेरेंट्स 60 years, सॉरी 60 years से कम है आपके, तो आपको मेडिकल इंश्योरेंस मिलेगा, उनके लिए भी 25,000. टोटल आपको कितना मिलेगा? 25,000 आपके लिए, 25,000 आपके पेरेंट्स के लिए, टोटल 50,000. बट आपके पेरेंट्स अगर 80 years से अबव, so in that case you are allowed a deduction of ₹50,000. 25,000 आपके लिए या चिल्ड्रन के लिए, स्पाउस के लिए तो मिलेगा ही मिलेगा, और आपके पेरेंट्स के लिए जो 80 years से अबव है उनके लिए कितना मिलेगा? 50. तो टोटल कितना डिडक्शन मिलेगा आपको? 75,000 डिडक्शन will be allowed to you. Okay? Yes. Then next deduction is 80DD. What is the deduction in the section 80D? What is the condition of deduction for 80DD? So let's see. Medical treatment for handicap dependents or the payment to specified scheme for maintenance of handicap dependents. Disability is 40% or more than the place, less than 50%, and disability is 80% or more. So see, if you pay some amount for medical treatment of any handicap dependent on you, or the payment to
हैंडीकैप सर्टिफिकेट में लिखा होगा कि इसकी डिसेबिलिटी कितनी परसेंट है, तो अगर 40 से 80 के बीच में है देन यू आर अलाउड 75% 75,000 रुपीज डिडक्शन, और अगर डिसेबिलिटी 80% और मोर है देन इन दैट केस यू विल अलाउ द डिडक्शन शुड बी 1,25,000. किसको मिलेगा ये डिडक्शन, टू whom this deduction will be allowed, resident individual या resident HUF. In this case only resident individual and resident HUF is allowed for this deduction. No resident is not allowed for this deduction. Okay. Yes. Now next deduction is deduction 80DD. What is it? Deduction 80DD is allowed in the case when you are doing any medical fee. If you are paying any amount for the medical fee. अगर आप मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए तो इसमें देखिए 80DD में क्या था कि आपने मेडिकल ट्रीटमेंट किसके लिए दिया, ये अमाउंट किसके लिए दिया मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, हैंडीकैप डिपेंडेंट के लिए. और अगर आप अपने लिए स्पाउस के लिए या अगर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट करवाते हैं उसके लिए कुछ अमाउंट पे करते हैं तो whom this reduction will be allowed, resident individual or resident HUF. Okay. For non-resident individual or non-resident HUF, this deduction will not be allowed. What will be the quantum of deduction? So lower of rupees 40,000 or the amount is actually paid. Okay. So lower of rupees 40,000 amount is actually paid with the or lower of rupees 1 lakh or the amount actually paid will be your quantum of deduction. What is it? Let me read. Yes. So reduction in the section 80DD is allowed with the person who is paying some medical treatment amount. This deduction will be allowed to resident individual resident. तो see अगर आप कोई मेडिकल ट्रीटमेंट आपका है आपकी स्पाउस का या आपके किसी डिपेंडेंट का मेडिकल ट्रीटमेंट आप करवा रहे हैं जो कि हैंडीकैप नहीं है, हैंडीकैप होगा तो पहले वाले सेक्शन में आएगा दैट इज 80DD. और अगर वो हैंडीकैप नहीं है उसके मेडिकल ट्रीटमेंट करवा रहे हैं आप तो आपको डिडक्शन कितना मिलेगा, लोअर ऑफ 40,000 और द अमाउंट एक्चुअली पेड. So 40,000 and amount actually paid whichever is lowest will be deducted. Okay. ये कब होगा जब आपकी एज, यू आर नॉट सीनियर सिटीजन, अब जब आपकी एज 60 से 60 ईयर्स से कम है. और अगर एज 60 ईयर्स से ज्यादा है जिनके मेडिकल ट्रीटमेंट आप करवा रहे हैं उनकी एज 80 से ज्यादा है तो आपको कितना डिडक्शन मिलेगा, 1 लाख रुपीज, और अमाउंट एक्चुअली पेड whichever is less will be the amount of deduction. So lower of 1 lakh or amount of actually paid will be deducted. Yes. Now lower of rupees 40,000 or the amount actually paid and lower of 50. So suppose let's give an example. Suppose मैं एक पर्सन ही जो मैं मेडिकल ट्रीटमेंट करवाती हूँ, मेरे ऊपर एक डिपेंडेंट पर्सन है जिसका मैं मेडिकल ट्रीटमेंट करवा रही हूँ. ठीक है. उस पर्सन की एज है 80 ईयर्स, सपोज 80 ईयर्स उसकी एज है और उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट में मैं पे कर रही हूँ कितना 1,50,000. मेडिकल ट्रीटमेंट मेरा लग रहा है 1,50,000 रुपए एक साल. तो अब मेरे को उसके लिए डिडक्शन अलाउ होगा, किसमें अलाउ होगा, अंडर सेक्शन DD में. कितना अलाउ होगा, जब आप सीनियर सिटीजन नहीं है तो 40,000 एंड एक्चुअली पेड विचेवर इज. बट मैंने क्या बोला 80 ईयर्स एज है जिसका मैं मेडिकल ट्रीटमेंट करवा रहा हूं, दैट मींस वो सीनियर सिटीजन है, उनकी एज क्या है 60 से अबव है. तो उस केस में मेरे को सेकंड वाले डिडक्शन मिलेगी, दैट मींस 1 लाख रुपीस एंड एक्चुअली पेड. एक्चुअली मैंने कितना पे किया 1,50,000 रुपीस और 1 लाख whichever is less is 1 lakh. तो डिडक्शन कितने का मिलेगा 1 lakh. Okay. So this is the deduction in the section 80DD. Okay. Yes. Now next deduction is for 80. So when this deduction will be allowed, payment of interest of loan taken for higher studies. If you are pay any interest on loan that is you pay that which you take for the payment of this deduction will be allowed on the payment of interest. On which interest? The interest on loan which you take for the higher studies. अगर आपने अपने हायर स्टडीज के लिए कोई लोन लिया उसके ऊपर अगर आप इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं then in that case this deduction will be allowed. Okay. तो ये हायर एजुकेशन के लिए जो आपने लोन लिया है वो किसी के लिए हो सकता है, खुद के लिए या आपके चिल्ड्रन के लिए या आपके स्पाउस के लिए. तो this deduction will be allowed to individual. This deduction will be allowed to individual. What will be the quantum of deduction? So interest paid for the period of 100% interest आपका आपको deduction मिलेगा. 100%
इंटरेस्ट, आप जितना भी इंटरेस्ट पे किया है सब पूरे का 100% का आपको क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा। एंड व्हाट कितने साल तक मिलेगा आपको, अ पीरियड ऑफ 8 इयर्स। सपोज आप 8 इयर्स में आप एजुकेशन लोन का पेमेंट नहीं कर पाए तो फिर उसके बाद आपको डिडक्शन मिलना बंद हो जाएगा। ओके, अगर आपने एक बार सपोज आपने 7 इयर्स में ही पे कर दिया, तो जब आपने लोन लिया उसके बाद 7 इयर्स में पे कर दिया तो 7 इयर्स तक आपको डिडक्शन मिलेगा, क्योंकि आपको पे हो चुका है। उसके बाद तो आपको इंटरेस्ट दे ही नहीं है और लोन ही पे हो गया, तो कोई भी डिडक्शन नहीं है। 6 साल के लिए अगर आपने 6 साल में ही आपने अपना लोन वापस रीपे कर दिया है बैंक को, तो सॉरी, इन दैट केस ऑल्सो 6 इयर्स में ही आपका डिडक्शन खत्म, उसके बाद कोई डिडक्शन नहीं। लेकिन आपका सपोज 9 इयर्स तक, आपका अगर 9 इयर्स तक भी आप पे नहीं कर पाए तो 8 इयर्स तक आपको डिडक्शन मिलेगा, उसके बाद किसी साल में डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। ओके, then next deduction is 80AA. So what is deduction 80AA? Deduction in respect of interest on home loan for first time home loan. तो ये डिडक्शन किसको मिलेगा, ऑन द इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन पे कौन सा डिडक्शन मिलेगा, 80। और 80AA किसको मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन होम लोन फॉर फर्स्ट टाइम होम लोन, जो उस घर का फर्स्ट टाइम ओनर है, सेकंड हैंड ओनर नहीं, जिसने खुद ने वो घर बनाया, फर्स्ट टाइम ओनर है उस घर का। तो होम टू दिस डिडक्शन इज अलाउड, टू इंडिविजुअल दिस डिडक्शन will be allowed. और what will be the quantum of deduction? The quantum of deduction will be 50,000. ओके, तो डिडक्शन कितना मिलेगा, 50,000 रुपए, कितना 50,000 आपको डिडक्शन मिलेगा। सॉरी, मैक्सिमम नहीं, डिडक्शन मिलेगा ही कितने का, 50 का मैक्सिमम नहीं लिखा। तो अगर आपका इंटरेस्ट 40,000 है तो भी आपको 50,000 का डिडक्शन है। अगर डिडक्शन आपको 60,000 है, अमाउंट आपका एक्सपेंसेस जो है आपका इंटरेस्ट को 60,000 है तो भी 50,000 का डिडक्शन है, 70,000 है तो भी 50,000 का डिडक्शन है, 10,000 है तो भी 50,000 का डिडक्शन है। लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम नहीं लिखा हुआ, मिलेगा ही आपको कितना, 50,000। चाहे आप 10,000 का पेमेंट कीजिए, चाहे 5,000 इंटरेस्ट का पेमेंट कीजिए, 30 का कीजिए, 40 का कीजिए, चाहे 60 का कीजिए, हर केस में आपको कितने का डिडक्शन मिलेगा, 50,000 का डिडक्शन। So these are some deduction which today we discussed. In next lecture we will discuss some more deductions. Okay? So that's all for today. Thank you guys.